Hello everyone and welcome to my live stream. So today it's little late than usual, but nevertheless we will continue with our factorization part. Okay, so today we are going to discuss one more identity and it's a very important one. Okay, so we have x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx. Okay, so I have seen students, they find this identity very difficult, mostly because this is very long. Okay, so like I always say, if we know how to derive it, then our factorization part becomes very easy. So let's learn how to derive this identity and then we will go for solving questions. Okay, fine. So we'll start. So let's write x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. Okay, so what we'll do, we'll make a group of x cube and y cube. I mean, we'll write down x cube and y cube within a bracket and z cube and minus 3xyz. Okay, so this x cube plus y cube. Now if you have seen my yesterday's live stream, or if you have gone through my recorded video, you will find that x cube plus y cube can be written as x plus y whole cube minus 3xy into x plus y. Okay, why this can be written? This is very well explained in yesterday's live stream, which has been uploaded. I would suggest before going through this, you have to go through the proof part. Okay, so then this will be cleared as to why x cube plus y cube has been written in this way. So and the remaining part z cube minus 3xyz. So we have x plus y whole cube and x plus y. So what we can do, we can let x plus y, just assume any other variable. I am taking x plus y equals to a. Okay, so then this will become, if we replace x plus y by a, this will become a cube minus 3xy, and in place of x plus y we will write a. So this becomes 3 minus 3x ya plus z cube minus 3xyz. Fine. So we'll just rearrange them. So I will write a cube and z cube, then minus 3xya and minus 3xyz. Proud Joseph said hi. Hello, Proud Joseph. How are you? Okay. So what we'll do in the next step, now we have a cube plus z cube. So this is what we learned yesterday. It is in the form of x cube plus y cube. So we will factorize this part. Okay. So this will be a plus z a square minus az plus z square. Adhish Prince. Hello, Adhish Prince.
Okay. So the remaining two terms, minus 3xya and minus 3xyz. So we see we can take 3x and y along with the negative sign. So I will write minus 3xy as a common term and then a plus z. Okay. Now in these two terms we have a plus z and a plus z as common factor. So we'll take these two as a common factor, a plus z, and we'll write the remaining part, a square minus az plus z square minus 3xy. Okay, so I hope this is clear up till now. So we will replace the a. In the next step we are going to replace the a's with x plus y. Okay, so this a when replaced will become x plus y and z. So as we can see, we are starting to get what we are needed to. Okay, then we have a square. Now for writing the a square you have to be careful. We have to write, in place of a is x plus y, so x plus y whole square. Then we have minus az, so in place of a we will write x plus y again and then z. Then we have z square and minus 3xy. So x plus y plus z. So x plus y whole square is x square plus 2xy plus y square. Okay, then z into x is xz and this will be minus xz. Similarly this will be minus yz. Okay, and then z square minus 3xy. So x plus y plus z is equal to, now we are going to rearrange them. So we need x square plus y square plus z square, is it? So we have x square, y square and z square. So we'll write x square plus y square plus z square. Then we need minus xy, minus yz and minus zx. So do we have minus xy? No, we don't have. But we have 2xy and minus 3xy. So 2 minus 3 is minus 1. So this will become minus xy. Then we have minus yz and we have minus xz. So this is what we are required to prove. Okay. So if you want, you can write, therefore x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus xz. Done. Okay, so there is one more variation, or should I say condition in this property. Okay, so let me take a new page and write the condition. So this condition is also used along with this identity. Okay, so let me take a new page for you. Let me adjust the notebook first. Okay. Done. Okay, so the condition says if
x plus y plus z equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube becomes 3xyz. Okay, so this is another important property inside this algebraic identity. Okay. So now let's derive this identity as well. Okay, so we have been given x plus y plus z equals to 0. Is it? So what we can do, we can keep the x plus y on the left hand side and we can transpose the z to the right hand side. So this becomes minus z. Okay, now what we can do, we can cube both the LHS and RHS, left hand side and the right hand side. So then this will become x plus y whole cube and minus z whole cube. Okay, I am doing this very slowly so that this is understandable by all. So x plus y whole cube is what? X cube plus y cube plus 3xy into x plus y. Okay, and the cube of negative is always negative, so this will be minus z cube. Okay, now we have x cube plus y cube. Now 3xy, in place of x plus y, we have already derived that the value of x plus y is minus z. So in place of x plus y, we will write minus z. Okay, and this is minus z cube. So x cube plus y cube. Now if we multiply the variables x, y and z, so this will be 3xyz, but since z is negative, so this will become minus 3xyz, and we will write minus z cube. Now if we transpose minus 3xyz to the RHS right hand side and minus z cube to the LHS, we will get what we are required to prove, x cube plus y cube. So this becomes z cube, and this when transposed becomes 3xyz. So this is what we were required to prove. If x plus y plus z is 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. Okay, so these two derivations are equally important along with the questions. Chalo, then we will do some factorization. Factorize a cube plus 27b cube plus 8c cube minus 18abc. Yes, sir? So let me write the expression first. A cube plus 27b cube plus 8c cube minus 18abc. Okay. Now see, 27 is a cube of 3, 8 is a cube of 2, and a cube can be written as a whole cube, right? So let's rewrite this. A whole cube plus 3b whole cube plus 2c whole cube minus 3 into a
into 3b into 2c. You can just cross check. 3 into 3 is 9, 9 into 2 is 18, a into b into c is abc. Okay. Now after writing the expression in this form, we are going to factorize it. Okay. So I am writing from this side. Actually all the equals should be on the straight line. So a plus 3b plus 2c, a whole square plus 3b whole square plus 2c whole square minus a into 3b minus 3b into 2c. I am just writing here, okay, otherwise this will not cover. Or should I adjust my notebook? Just give me a minute. Okay. Okay, let us write here, otherwise it will be difficult to adjust the notebook again and again, no? Okay, so minus a into 3b, 3b into 2c, and minus 2c into a. So a plus 3b plus 2c. A whole square is a square plus 9b square plus 4c square. A into 3b is minus 3ab minus 3b into 2c is minus 6bc and minus 2c. So this is our answer. Okay. So let's try a few more questions. Factorize. Let's try with a negative term. No? A cube minus 8b cube plus 64c cube plus 24 abc. Okay. So always three terms can be expressed in form of cubes. No? 64 is how much? 4 cube. 8 is 2 cube. And a whole cube can be anyways written as a cube can be written as a whole cube rather. Okay. But we have a negative term. Negative. So this is a whole cube. But we have to write plus because the identity does not have negative in between the first three terms. No? We have x cube plus y cube plus z cube. So we have to write positive sign, and then within bracket we can write minus 2b whole cube. Then 64. 64 is 4c whole cube. Okay, and then minus 3 into a into minus 2b into 4c. You can cross check. Negative and negative gives positive. 4 into 2 8, 8 into 3 is 24, and a into b into c is a b c. Okay, so now we can proceed.
a plus minus 2b plus 4c. A square, a whole square plus minus 2b whole square plus 4c whole square minus a into minus 2b minus 2b into 4c minus 4c into a. Okay, try to write it in a single line. Okay, my notebook is not permitting to write such a long line in one straight line. Okay, so I am breaking it up anyways. So this will be a positive and negative when multiplied is negative, so this is minus 2b and plus 4c. So a square, a whole square is a square. Acha, square of negative is always positive. Kavish Gupta says hi, namaste sir, namaste ji. Param, pardon me if I am pronouncing your name wrong. Okay, Paramhans, Paramhans. Okay, hello Paramhans. Kavish, please could you teach some basic tricks? See, for factorization, such type of factorization, no, we don't have. The identity itself is such a long identity, huh? So there is no such thing as a trick like solving this, no. You have to just follow the identity, you have to follow the rules, and then you have to solve it. और कोई उपाय नहीं है इसके लिए, ना. So square of negative, like I was saying, square of negative is always positive, so this is 4b square. And the thing is, एग्जाम में यही दो स्टेप्स लिखने के लिए मार्क्स मिलेंगे ना कविश. So if you use any trick for this, I don't think you are going to get full marks. Just दो ही steps की बात है ना. This is the first step, the question itself, and then 2 more steps. So इसमें अभी क्या trick use कर सकते हैं ना. Anyways, but I am glad you asked the question. 16c square. Then negative and negative is positive. Positive 2ab. Then negative and negative is again positive. 2 into 4 is 8bc and minus 4ca or ac. थैंक यू कविश. अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द स्ट्रीम ऑल्सो एट द सेम टाइम. आप लोग इतना लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल. Okay, so next question is a cube minus b cube plus 1 plus 3ab. So a cube, okay, let me write the question first. A cube minus b cube plus 1 plus 3ab. So a cube is a whole cube. So minus b cube, we will write the plus sign and then write minus b whole cube. 1 can be written as 1 whole cube and minus 3 into a into minus b into 1. So negative negative is positive and a into b, ab. Okay. So this is a
plus b plus c, a whole square plus minus b whole square plus 1 whole square minus a into minus b minus of minus b into 1 minus 1 into a. So our answer will be a minus b plus 1, a square, whole square of negative is positive, plus b square plus 1. Negative multiplied by negative is positive, ab. Negative multiplied by negative is positive, and b into 1 is b, and minus a. Lucy Warren's word. Welcome to my live stream. It's always nice to see a subscriber joining my live stream. Okay, let's take some new questions, bit difficult ones. और कविश जी बताइए कुछ अपने बारे में, कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं, पढ़ाई, जॉब? वो आप 9th में हैं? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका तो बिल्कुल काम का ये आज स्ट्रीम चल रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और कहाँ से हैं आप रवीश? ओके, इतना हार्ड नेम है, अगर गलत प्रोनाउंस किया तो माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट ऑफ एडिट्स, ओके, कैपिटल ऑफ द नेशन से हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ऑफ एडिट्स, नमस्ते नमस्ते। आप 10th में हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी आपके एग्ज़ाम्स यहाँ पे तो सबके अभी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आपके भी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं अभी? तो आप दोनों दिल्ली से हैं, बहुत बढ़िया। क्यों, मैथ्स में क्यों वीक है आप? मैथ्स पसंद नहीं है आपको? ओके, जुलाई में ना?
पर यहाँ पे और मैं 11th में साइंस लेना चाहता हूँ। हाँ कोई बात नहीं है, साइंस अभी तो 11th में पहुँचने के लिए अभी आपको 10th का पूरा साल निकालना है, मेहनत कीजिए बहुत बढ़िया से। क्यों नहीं कर पाएंगे। पसंद है पर प्रैक्टिस नहीं की, हाँ वही बात रहती है हमेशा। तुलसीदास, कैन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन क्लास 10th? Yes, I can definitely solve, but as of now, today I am focusing on class 9, this one, polynomial chapters. Which problem you want me to solve, Tulsidas? मैं सर मैथ्स के लिए कुछ एडवाइस या सजेशन, देखिए मैथ्स तो मतलब क्या ही कहें, मैथ्स के लिए बस प्रैक्टिस, उसके उसके अलावा और कोई सजेशन नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है मैथ्स में अच्छा करने के लिए। और आपको पसंद तो है ही, तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्वेश्चंस, है ना। तो बस प्रैक्टिस कीजिए। हाँ एक सजेशन मैं दे सकता हूँ कि अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में मैथ्स को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है ना। और मतलब ये कि आप टाइम देख के मत पढ़िए ना। बहुत मैंने स्टूडेंट्स को देखा है ना कि मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ या 1.5 घंटा, तो ऐसी बात नहीं है। आप 1 घंटा पढ़ के अगर बस उसमें बस 1 या 2 ही क्वेश्चंस करें तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना घड़ी देख के। तो आप मतलब कि क्वालिटी में वो फोकस कीजिए कि कितना प्रैक्टिस किया मैंने आज, कितने सम्स किए। 10 मतलब 10, आप चाहे 10 क्वेश्चन का टारगेट लीजिए, तो आप चाहे 10 क्वेश्चन 15 मिनट में ख़त्म करें या 1 घंटे में या 2 घंटे में, तो आपका दिन का टारगेट वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ना है रोज़। मैं हमेशा ये बोलता हूँ हमेशा, है ना। कन्फ्यूज़न काफ़ी होती है। हाँ कन्फ्यूज़न तो होगा ही ना, तो अब नया कुछ जब सीखते हैं तब कन्फ्यूज़न होना तो मतलब इट्स क्वाइट ऑब्वियस ना। कविश गुप्ता, सही बात है सर। हाँ हाँ ये तो बिल्कुल, जब हम स्टूडेंट्स थे तब भी हम वही करते थे। और आजकल तो मोबाइल वगैरह भी आ गया ना, तो टाइम तो मैथ्स के साथ साथ मोबाइल अगर ले लेते हैं तब तो हो गया आपका। है ना। बचीरा, सर मैथ्स के लिए अगर सिर्फ आरडी करें तो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। मैं फ़िलहाल ये वाली बुक से कर रहा हूँ, मैं दिखा ही देता हूँ एक बार। ये लेकिन थोड़ी पुरानी बुक है, ये RS अग्रवाल, वीना अग्रवाल, ये वाली, ये बहुत पुरानी बुक है। ये शायद 4-5 साल पुरानी बुक होगी, तो मैंने नई एडिशन ली नहीं है अभी तक। आरडी कर सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है, मैं उसको भी फॉलो करता हूँ। और मैं नेक्सो भाई से कहना चाहता हूँ, अगर कन्फ्यूजन है तो क्लास अच्छे से कीजिए, स्कूल में हो चाहे ट्यूशन हो चाहे यूट्यूब देखिए, कहीं भी कीजिए। बट कन्फ्यूजन जो भी डाउट है, डाउट को पहले क्लियर कीजिए, तब बढ़िया से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। सर ग्राफ बहुत कंफ्यूज करते हैं, और 10th में हर चैप्टर में हाँ वो तो है भी। 10th में लीनियर इक्वेशन हो गया, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ग्राफ में तो ग्राफ है ही, वो स्टैटिस्टिक्स में। और पता नहीं बाकी यहाँ का सिलेबस थोड़ा अलग है इसीलिए। काव्या गुप्ता, अच्छा मैं बढ़िया हूँ काव्या गुप्ता, आप कैसे हो? फ्रेंडली नूब, a³ + b³ + c³ का क्या फॉर्म है? अभी मैं यहाँ पे कैसे बताऊँ? आप एक काम कीजिए, आप चैनल से जुड़े रहिए। मैं पिछले कई दिनों से ये पॉलिनोमियल्स में ही लगा हुआ हूँ, तो ये पॉलिनोमियल भी मतलब ये भी मैं कवर कर लूँगा। आज सोच रहा था कि आज ये लास्ट दिन रखूँगा, लेकिन और शायद 2-3 दिन और लगेंगे, कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ वो भी डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो बातें भी करते रहेंगे और ये सॉल्व भी कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। सो 8 इज़ 2³ 27 इज़ 3³, बट इसको अभी कैसे लिखा जाए, है ना।
2√2 है ना। सो दिस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि √2 का अगर क्यूब किया जाए, ओके, ये रफ वर्क है, दिस इज रफ वर्क। √2 का अगर क्यूब किया जाए तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2, है ना। तो दिस √2 मल्टीप्लाइड टू √2 बन जाएगा 2, और ये बचा हुआ √2, यानी कि यहाँ पे जो √2 है उसको हम लोग √2 होल क्यूब लिख सकते हैं। ओके, वी कैन राइट दिस 2√2 a³ एज √2 a होल क्यूब, ठीक है। देन 8b³ हो जाता है 2b होल क्यूब, एंड दिस इज प्लस, जैसा कि बताया आइडेंटिटी में वी डोंट हैव एनी नेगेटिव साइन, सो इसमें पॉजिटिव डालना ही है, एंड देन -3c होल क्यूब एंड -3 इंटू √2a 2b and -3c. Okay, so negative positive, then 3 into 3 is 9, 9 into 2 18, √2 a, b and c. Okay, so now we can proceed for the factorization part. ठीक है, so √2a plus 2b ठीक है, सो होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस -3c होल स्क्वायर. सो अगेन लैक ऑफ स्पेस. अच्छा तुलसीदास, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू, लेट मी कंप्लीट दिस. -√2a into 2b minus 2b into -3c. ओहो, ना स्पेस से -3c into √2a. ओके, प्लीज़ ट्राई टू राइट इन वन सिंगल लाइन. ओके, आप देख ही सकते हैं स्पेस थोड़ा कम है. सो एनीवेज, so this will be √2a plus 2b minus 3c. So √2a whole square will be 2a square, 2b whole square will be 4b square, and square of negative is positive, so this is 9c square. Achha, minus we have √2 into 2, so this is 2 √2ab, then negative into negative becomes positive, 6bc, and again negative into negative is positive, this will be positive 3√2ca. Okay, so this is our answer. बच्ची 2√2 वाला पार्ट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से समझ लोगे. अच्छा तुलसीदास, जस्ट एक मिनट रुक जाइए. तुलसीदास इज आस्किंग समथिंग. ABC अ तरंग, ABC अ तरंग, एंगल B = 90 डिग्री, D is a point in AB, they. ओके ओके, तो एक काम करते हैं, पहले ये फैक्टराइजेशन का पार्ट कर लेते हैं, अभी मेरा दिमाग घूम जाएगा नहीं तो. ओके, ডিজিট বর্মন, মজ্জা, বঢ়িয়া তেনেহ'লে ন. আচ্ছা, मोमो सेड हाय. हाय. ओके बचीरा भाई, यू आपको ये समझ में नहीं आया था ना 2√2 वाला. सो देखिए, मतलब कि
8 है, 8 को 2 का क्यूब बना के लिख सकते हैं ना, 27 को 3 का क्यूब बना के लिख सकते हैं। बट 2√2 को एज सच मतलब एक बार में देख के नहीं बताया जा सकता ना कि किसका क्यूब के फॉर्म में लिखें। देखो कॉपी टेढ़ी हो गई है क्या मेरी? ओके। सो मैंने ये दिखाया है कि अगर हम √2 का क्यूब करते हैं, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है ना, सो √2 इंटू √2 इंटू √2। सो इनमें से अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, √2 इंटू √2, ठीक है, तो ये 2 बन गया, और जो बचा हुआ √2 है तो ये 2√2 बन गया ना। सो जो ये 2√2 है ना, तो इसको हम लोग √2 का होल क्यूब बना के लिख सकते हैं। वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ ये रफ वाले में। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे अभी, और बाकी तो जो आइडेंटिटी है उसी में है ना। ओके तुलसीदास, प्लीज़ आप एक बात समझिए। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। सो टुडेज स्ट्रीम इज exclusively dedicated for polynomials. Okay, so what I can do, I have just noted down your question. I will try to get back to you as soon if possible. I will make a video tomorrow and upload it. Okay, so don't worry, I will get back to you. But since आज ये polynomials के लिए dedicated है, so आज triangle में नहीं जाते हैं, ठीक है। I hope you understand and please don't mind for that. Okay, मैं ज़रूर से ये सॉल्व करके दूंगा चैनल पे, दैट्स फॉर श्योर। सो लेट्स मूव ऑन। बाय द वे टाइम क्या हुआ है? आई हैव लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। ओके, 12:30 बजने वाला है ना। ओके, सो आई गेस इसके लिए मुझे और एक सेशन रखना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग टू कवर फ्यू मोर क्वेश्चंस, बट आज टाइम नहीं मिलेगा। मतलब दिन के पूरे भाग दौड़ के बाद ये रात को लाइव स्ट्रीम जाना इज़ वेरी मच टायरिंग। बाय द वे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग ने कर लिया होगा शायद, और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। एनीवेज, सो फैक्टराइज p माइनस क्यू क्यूब yes it's height and distance. I know right. But like I said, today I am focusing on only polynomials. Okay, what are factorials, Bachira? Okay, बढ़िया है, friendly look, please explain to him what is factorial.
सर सो जाइए वरना हेल्थ इशू हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई, जब स्टूडेंट थे तभी रात भर ही पढ़ते थे, अभी टीचर बन गए तभी रात भर ही वीडियो बना रहे हैं। तो वो एक गाना है ना, अब तो आदत सी हो गई, क्या है गाना, आतिफ असलम का एक गाना था ना, वही वाला। एनीवेज, सो we have p minus q whole cube, q minus r whole cube and r minus। सर अगर आप लाइव स्ट्रीम करते करते सो गए, नहीं नहीं वो पॉसिबल ही नहीं है, मैं स्कूल में बैठा हुआ हूँ ना कैसे सो जाऊँगा बैठे बैठे। लूसिस वैरन वर्ल्ड, हेलो लूसिस वैरन वर्ल्ड। So I am talking to few of my subscribers in Hindi, okay? ये मेरी सब्सक्राइबर है लूसिस वैरन वर्ल्ड। अबीर 10, हाय सर आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। हेलो हेलो अबीर। नमस्ते सर। आई एट एन इंसेक्ट और मुझे उल्टी आ रही। क्या आपको खाना नहीं खाया था क्या, अभी इंसेक्ट खा रहे हो आप? अभी अभी आपको हिंदी आती है, यू नो हिंदी? बहुत बढ़िया। तो अभी क्या करते हैं आप बांग्लादेश में? आर यू अ स्टूडेंट, आर यू वर्किंग, क्या करते हैं? एंड बचीरा यू नो वन थिंग, आपने इंसेक्ट खाया है अभी और मैंने डिनर किया हुआ है 7:30 PM को, तो और ज़्यादा देर जगूंगा तो भूख लगेगी, तो इसीलिए भी स्ट्रीम को एंड करना भी है। Yes, yes, XYZ, I am not going to repeat the later part of your name. Yes, that is what we are going to do. Okay, Abhi, you are student. Nice. So in this question we are going to use the second identity or the second condition that we discussed, that if x cube plus y cube plus z if x plus y plus z equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to minus 3xyz. Okay, Mr. XYZ has already given the answer in the chats. So we'll do a plus b plus c. Let's see what happens. So we have p minus q plus q minus r plus r minus p. So p and minus p will get cancelled, q and minus q will get cancelled, r and minus r will get cancelled. So answer is 0. So by the property we will have a cube plus b cube plus c cube equals to 3. Okay, I have forgotten to write that. Therefore 3abc.
So we'll just replace the values then. A is p minus q whole cube. B is q minus r whole cube. And C is r minus p whole cube is equal to 3abc. So 3p minus q, q minus r, and r minus p. Alrighty then. Okay, Mr. XYZ, you are a little late to our stream. We have already covered many questions today. I am about to wrap up. Oh, you have posted one question also. Let R denote the set of real numbers. Define the function. Okay, so the thing is, I have already told in my stream that today I am strictly focusing on polynomials. Okay, so I will just note down your question. But I hope you have subscribed to my channel, Mr. XYZ. आपके नाम से ही, I mean, all your name consists of all the variables. Priya Suman says hello. Hello, Priya Suman. One more question. Okay. You can do one thing. I usually go live almost every day at this time, so you can join. You can solve as many questions as you want, Mr. XYZ. Let's solve it together. Yeah, sure. We'll join tomorrow. Anyways, so what I was saying is, I was planning to cover a few more questions, but because of time constraints, I have to wrap it up today. So before ending, I would just like to thank all my viewers who joined today. All the maths enthusiasts, I should say. Thank you so much for joining, and I hope you have liked my stream and you have subscribed to my channel. I will try to cover more topics, okay, in the coming days, and I will probably do the cover the same identity for tomorrow. And once this stream ends, the video will get uploaded automatically. In case you have missed something, you can just refer to the videos in the live section, not the video section. We have videos, then shorts, then live. In the live section part, the video will get uploaded automatically. Okay, so it's already late. So once again, thank you so much to all my viewers. Take care, all of you. Bye bye. Good night.